everyone, welcome to my channel. And today I have with me an ultra runner, Dr. Sonali Honrao. If I talk about her, उन्होंने बहुत सारा half marathons किया है, full marathons किया है, बहुत सारा half marathons में she's been a pacer also. But along with that, उन्होंने 12 hours stadium run, ultra run भी किया है. She's also done 50 kilometers run at Tata Ultra Lonavla. August 2022 में she did her first Comrades marathon which happens in South Africa. और उसके बाद बात करें back to back in December 2022 she did her 100-kilometer border hell race. तो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स गेट स्ट्रेट एंड लेट्स टॉक टू डॉक्टर सोनाली हॉनराव. वेरी वेलकम मैम, एंड प्लीज टेल मी आपका रनिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, मतलब क्या कहानी थी उसके पीछे बेसिकली. Yeah, hi Meenal. Thank you for having me on this platform. Well, as they say, life begins at 40. तो वैसे ही कुछ हुआ कि आफ्टर आई टर्न 41 के बाद जो है ना, जब वी स्टार्ट थिंकिंग थोड़ा अपने लिए टाइम दिया जाए. एंड इट्स सो हैपन कि हाँ चलो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, थोड़ा करियर वाइज भी सेट हो गया है, एंड इट्स टाइम दैट यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ. हेल्थ स्टार्ट्स प्लेइंग बैक ऑफ द माइंड, लगने लगता है कि यस वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. एंड वहां से जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई. एंड आई इनिशियली स्टार्टेड वॉकिंग. फिर मुझे लगा कि नहीं, वॉकिंग इज नॉट हेल्पिंग मी टू लूज वेट. तो मैंने कहा चलो लेट मी स्टार्ट और ट्राई रनिंग. माय हस्बैंड इज अ स्पोर्ट्स पर्सन. he has been playing a variety of sports right from his childhood days. तो he encouraged me कि बोले कि एक बार रनिंग ट्राई तो करो, कोशिश करो, मे बी दैट विल हेल्प यू लूज योर वेट. तो वेट लॉस के चक्कर में आई स्टार्टेड रनिंग, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट मुझे अच्छा लगा, एंड देन आई हैव बीन कंटिन्यूइंग रनिंग सिंस देन. So it started at the age of 41. And which year did you start it? Sorry? Which year did you start it in? I started it in mid 2016 when I was 41 years old. So I started running, and initially I was so skeptical ना कि बाहर जाऊंगी, पसीना आएगा, एंड मुझे नहीं, वो गर्मी में एंड ऑल आई विल नॉट बी एबल टू रन. तो मैं ट्रेडमिल पे कोशिश कर रही थी भागने की, एंड ट्रेडमिल पे 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक हो जाता था. फिर एक लायंस क्लब का जो एक इवेंट आया 5 किलोमीटर रन, तो मैंने कहा चलो लेट मी जस्ट रजिस्टर एंड सी, एंड लेट मी कम आउट टू द कंफर्ट ऑफ जिम. एंड एसी एयर कंडीशन जिम में तो अच्छा लगता है भागने के लिए. मैंने कहा चलो बाहर जाके देखते हैं. तो फर्स्ट 5 के इवेंट दैट आई डिड, मेरे को उसमें पोडियम मिला. एंड फिर मेरे को इतना, आई वाज फीलिंग सो एनकरेज्ड, एंड देन इट वाज लाइक नो लुकिंग बैक, अब तो मुझे भागना ही है. तो 5K के बाद 10K किए एक दो, फिर जो है 21K भी कर लिया, एंड देन 2017 केम, एंड देन अ डाउनवर्ड जर्नी स्टार्टेड. Okay, I'll stop you here. I think first of all, congratulations. मुझे लगता है एक रनर के लिए 5K बहुत बड़ा माइलस्टोन है. People talk about the bigger milestones, but वो first 5 किलोमीटर सबसे मुश्किल होता है और सबसे ज़्यादा खुशी देता है, because मतलब that is one thing जो हम सोचते हैं हम नहीं कर सकते. अगर हमने वो कर लिया, then I think the journey वहाँ से upward जाता है. But वो करना बहुत मुश्किल है. Mindset change करना in that. True. Right. तो मैम, now you did 5K and then 10K and 21K. थोड़ा सा और elaborate किए. Now 2016 में ही आपने 5K भी किया, 10K भी किया, 21K भी किया. तो आपने उसके लिए कोचिंग लिया, और how did you scale up to 10K and then 21K? Yeah, so unfortunately I didn't take any guidance from any coaches. I was just reading with all the information available on Google and internet, and that way. There were many training plans on various apps that you have on your phone. And somewhat what happens is too much of knowledge is also not good. तो वो जो है ना, नॉलेज आपको ठीक तरह से होना चाहिए. आपको क्या लेना है उसमें से, एंड क्या आपको क्या सूट करता है, वो आपको पता चलना चाहिए. बट देन मैं जो है वो करते गई, एंड मुझे वो तुरंत तो रिजल्ट दिख रहे थे. तो 5K मैंने जुलाई में किया था, जुलाई और अगस्त, आई एम नॉट वेरी श्योर. उसके बाद तुरंत ही मैंने सितंबर में 10K किया, एंड दिसंबर आई डिड माय फर्स्ट 21K ऑल्सो. तो वो स्केलिंग बहुत मेरा फास्ट भी हुआ, बट मुझे वो रिजल्ट्स मिल रहे थे, एंड आई वाज एबल टू डू इट, अचीव इट. तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी. तो वो खुशी की वजह से आई वेंट ऑन स्केलिंग अपवर्ड. So that's how 2016 was. ठीक. So I think all the endorphins start kicking in. मतलब बहुत ही जोश आ जाता है कि कुछ तो मतलब उखाड़ लिया है इतना रनिंग करके. I can understand the feeling. Okay, then talk me about 2017, ma'am. How was your 2017 now that you were scaling so fast?
Yes, yes. So that's how it hit me in 2017. So while I was running once, and I suddenly felt some pain in my knee, but then it was some kind of a niggle. I just ignored it and I kept on running it. But then I realized, जब pain बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर मुझे वहाँ swelling भी दिखी. Then I consulted my orthopedic. I had to do a CT scan, MRI. पता चला 2 fractures हुए हैं मुझे, below and above the knee. 2 stress fractures. So my entire leg was in plaster for 3 months. Then I had to undergo physiotherapy for another couple of months. Again, had to restart learning, how to walk, how to climb steps. All baby steps later, 2017 went in only recovery. It was then that I realized, what all mistakes I had done. No proper warm up, no proper cool down or stretching post run. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस मुझे पता चला. यू नीड अ प्रॉपर फोकस ट्रेनिंग. आप कुछ भी इंटरनेट से थोड़ा यहाँ से पढ़ लिए, थोड़ा वहां से पढ़ लिए, एंड देन यू डू इट. नहीं, ऐसे नहीं होता है. एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एंड यू नीड अ प्रॉपर कोचिंग. गुरु के बिना ज्ञान जो है अधूरा ही होता है. So you need someone to guide you what is right for you, how you should be going. Scaling है ठीक है, you're getting the results, पर इसका मतलब ये नहीं होता you just go on. There has to be taken periodic. आपको जो recovery होना है, you need a recovery phase also. So the importance of all these things, I realized it. And then, but I had never gave up running. And the reason of that was, I had a very supportive family, and my friends were very supportive. They always kept on telling me, okay, this is just a phase. This too shall pass. And then one day you'll again start running. Ma'am, can you please tell me something about your profession? What kind of hours do you work in? So that, our listeners get an idea about how you really plan your runs along your working hours. So I'm a doctor, but I'm not a practicing physician. So for me, that way I'm lucky. I work with a diagnostic chain, a leading diagnostic chain of India. And so my hours are quite fixed. The only challenge is that I have to leave as early as 8 a.m. in the morning. And I'm usually back by around 2 p.m. or so. And after that, I do tele-reporting. And that tele-reporting also gets over by 6 or 7 p.m. in the evening. So more or less, it's a relaxed job. So that way, I'm very lucky, that being a doctor also, my life is quite balanced that way. And I have, I can follow my, what do you say, regular diet and sleeping schedule and all that way, it's quite disciplined. Okay. So, ma'am, while you said that you leave your home at 8 in the morning, right? So then what time do you really plan your long runs or morning runs? When do you start your long runs? One thing is this. Another thing, okay, I'll ask after that. So, yeah. Okay. Yeah. So leaving at 8 a.m. is challenging. So I actually wake up at, 3:34 in the morning, finish my work, and 5 o'clock I'm out for a run. 5 to 7 is what I usually run on the weekdays. And yeah, luckily for me, where I stay, it's quite a safe place. We have a police station also very close in our vicinity. But apart from that, we have the Sanjay Gandhi National Park also very close to my place. And there, safety becomes slightly, challenging in the terms because there is a chance of wild animals coming out. It's not only, safety always against humans, but it's against the animals also, dogs also mostly. So that way, I'm blessed that I've got a running friends also and a running buddy who's there always with me. And then, we always try to catch up together and run when we run so early in the morning. So we usually run together. So that way I'm blessed. And otherwise, I would say Mumbai is a very safe place to run for women. And usually if you run very close to your housing societies and also you have the security guards over there. So in a way it is safe. But then yes, I'm blessed to have a running buddy who also runs with me in the early in the morning. We both are morning people, so 5 to 7 is what we run. Ma'am, as you said, you wake up at 3:30. Now, please don't tell me that you cook your own food. I do. You I cook do. That's the reason I have to wake up at 3:30, quarter to 4. So by 5 a.m. I finish everything, and then 5 to 7 is when I run. Oh God, ma'am, hats off to your, dedication to running. Because the first thing that came to my mind while I started running was get a maid to cook. I need the good food as much as everyone else do, but then I didn't want to cook myself. But hats off to you. Right. I want to understand, you are yourself a doctor. अब मैंने जितना समझा है, please no offense to doctors, but then
जब कुछ होता है ना, दे स्टार्ट सेइंग कि इतना प्रेशर वाला एक्टिविटी मत करो, डू लॉन्ग वॉक्स और मे बी डू लेसर स्मॉलर रन्स बट नॉट सो लॉन्ग रन्स, बिकॉज लॉन्ग रन्स आर एज डॉक्टर्स से प्रॉब्ली नॉट सो गुड फॉर नीज. एक तो मैं उस पार्ट को जानना चाहती हूँ, बीइंग अ डॉक्टर व्हाई यू स्केल सो फास्ट, और ऊपर से बीइंग अ डॉक्टर इटसेल्फ यू डिडंट रियलाइज, मतलब आपने अपने आप को इस हद तक खींच लिया कि स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, है ना. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑल्सो कि अपने अपने आप को इतना पुश कैसे कर लिया. तीसरा पार्ट, नाउ एज यू सेड, मैंने जितने भी लोग देखे हैं एक एज के बाद उनको कुछ इंजरी होता है, बिकॉज आई स्टे इन अ सोसाइटी, आई टॉक टू लॉट ऑफ विमेन, व्हाट दे से इज कि हमने योगा स्टार्ट किया था बट कुछ इंजरी हो गया, या फिर मे बी मैंने ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, कुछ इंजरी हो गया, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया, अब इसके बाद मैं नहीं करूंगी. So, how did that resolve came that after a fracture, प्लास्टर लगाने के बाद 3 महीना बेड पे बैठने के बाद आपने वॉकिंग स्टार्ट किया, फिर वापस आप रनिंग में आए, मतलब व्हाई नॉट यू स्टॉप्ड इट देयर इटसेल्फ. तो प्लीज आंसर दीज 3 क्वेश्चंस फॉर मी. Okay. So the first and the foremost thing is my orthopedic is a very supportive doctor and he always wanted to see me back running. तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं रनिंग से. And he was the person, he said कि हाँ अभी प्लास्टर में हो, but this doesn't mean that you're not going to run. जैसे ही प्लास्टर निकलेगा, फिजियोथेरेपी होगा, तुम बैक टू रनिंग ले जाओगी, ये मेरी गारंटी है. एंड ही हैज ऑलवेज एनकरेज मी. अभी भी कोई थोड़ा सा निगल हो जाता है ना, आई कॉल हिम अप, इमीडिएटली वो ऐसे मुझे जो है ना बोलेंगे 2-4 दिन रेस्ट करो, and he'll give me certain medicines, exercises, and he puts me back to running. And जहां तक आप बोलते हैं ना रनिंग से नीज खराब नहीं होते हैं, नीज खराब तब होते हैं जब आपके सपोर्टिंग मसल्स जो है ना स्ट्रांग नहीं है. So when you run, you don't run with your legs. You're supposed to run with your core muscles, your glute muscles, your entire body. And basically आप अगर कोर को एंगेज करके रन करते हैं तो कभी भी आपको जो है ना इम्पैक्ट और प्रेशर जो होता है उसका नीज पे नहीं आता है. So your knees will get injured only if your core and glutes are weak. Okay. So here I realize that strength training कितना important है. Okay. Okay. And मैम, आपको नहीं लगा कि अब छोड़ देते हैं, लाइक लेट्स डू वॉकिंग, मतलब रनिंग में ही ऐसा क्या पड़ा है, लाइक व्हाई डिड यू वांट टू गेट बैक? आप खुद भी रनर है, you know the the high that it gives, the running gives you that high. तो वो वॉकिंग में मजा नहीं है, कभी नहीं है. I mean आप ठीक है, when you do long distance runs आप वॉक करते हैं, बीच में जॉग करते हैं, बट जो रनिंग का मजा है वो रनिंग में ही आता है. आई थिंक ये आपने राज रख लिया, टिल रनर्स इटसेल्फ, यू हैव टू एक्सपीरियंस, डू इट टू एक्सपीरियंस इट, है ना. Do it to experience it, right? करेक्ट करेक्ट. तो ठीक है मैम, उसके बाद बताइए कि हाउ डिड यू स्टार्टेड बैक, और उसके बाद आपका जर्नी कैसा रहा आफ्टर 2017 में भी. Yeah, so after 2017, 2018, I did one half marathon. But then, things were a bit challenging on the home front also. Like I had to take care of my daughter, my career also and everything. So I used to even go for my runs late at night. 8 बजे 9 बजे रात को I used to go for my runs those days. Because मुझे टाइम नहीं मिलता था. Morning hours used to be busy, hectic, everybody going to work. उनका खाना बनाना, टिफिन बनाना and all. So things were challenging in the morning hours. But हाँ पर where there's a will there's a way बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहां रहा. तो मैं रात को 8 बजे भी जाती थी रन के लिए, 9 बजे जाती थी, जैसे मुझे टाइम मिले. नहीं टाइम मिल रहा है रात को, इफ मतलब रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है तो ट्रेडमिल पे जाके जो है मैं भाग लेती थी. बट देन आई वाज कंटिन्यूइंग इट इन सम और द अदर वे. देन वन पेशेंट ऑफ माइन सजेस्टेड दैट व्हाई डोंट यू जॉइन अ रनिंग ग्रुप. उससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा एंड आपको थोड़ा स्ट्रक्चर ट्रेनिंग मिलेगा, जिससे जो है आप स्टार्ट कर सकेंगे. But then वो हाँ ना करने में I took some few more months. But towards the end of 2018, I did join a running group. And वहां से जो है मेरी जर्नी जो है ना proper scientific and structured way में होने लग गई. Then I realized the importance of warm up. Warm up कैसे किया जाता है, कितना करना चाहिए, cool down कितना करना चाहिए. How many days in a week you should be running. That is also important. You cannot be running all 7 days a week. And how many days you have to do strengthening. आपको diet पे कैसे ध्यान देना है, आपको कौन सा gear use करना है. All these small factors जो है ना मुझे सब पता चलने लग गया when I joined this running group, and under a trained coach I could see the difference. ओके ओके. सो मैम, टॉक मी अबाउट, जैसे आपने कोच, फिर उसके बाद आपका क्या नेक्स्ट टारगेट रहा, लाइक आपने ठीक है कोच में किया, लाइक ग्रुप में किया, तो व्हाट वाज योर नेक्स्ट टारगेट नाउ वंस यू स्टार्टेड कोचिंग विद देम?
Yeah. So once I started coaching, I just wanted to, basically do whatever runs I do. Even if it's a half marathon, I wanted to do it comfortably. कि बिना हाफते हुए, and maybe I should, be able to run and talk at the same time. I used to see runners, they used to talk also and run also. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब ये कर पाऊंगी. And ठीक है, gradually it did happen. And in the meantime, I, consulted a nutritionist also. And then I realized, हमारे diet में we lack a lot of things. Basically, Indian diet is so much of carbohydrate based diet है अपना. Our main focus is on carbohydrate. अब देखिए आप लोग रोटी चावल, हम लोग खाना इस पर डिसाइड करते हैं कि आपने कितनी रोटी खाई या आपने कितना राइस खाया. We don't see the amount of dal we eat. या जो भी है, मतलब ब्रेकफास्ट में भी आप देखो तो इट्स मोस्टली पोहा उपमा होता है, या इवन अगर इडली है तो रेशियो अगर आप देखोगे ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, तो कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा रहता है अपने डाइट में. And I am mostly a vegetarian, occasional non-vegetarian, maybe eating on weekends or on some particular days that way. But basically, mostly a vegetarian. So here, when I met a nutritionist, I understood the importance of nutrition. I understood the importance कि macronutrients और micronutrients होते हैं. तो आपको प्रोटीन कितना ज्यादा खाने की जरूरत है, आपको विटामिन खाने की जरूरत है, एंड हर मील में आप कैसे प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हैं. अलग अलग तरह के प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए. ये नहीं कि आपने सिर्फ अंडा ही खाया तो सुबह दोपहर शाम आपने एग खा लिया तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आपके होते हैं. नहीं, ये प्रोटीन्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. तो उसमें आप कभी दही यूज करो, कभी आप बटर मिल्क लो, कभी मिल्क लो, कभी आप सोया चंक्स लो, पनीर लो. इन डिफरेंट फॉर्म्स आपको लेना चाहिए जिससे एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, एंड यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, जिससे आपकी रिकवरी भी अच्छी होती है, and it will help your muscles also to grow well, which will help you in running. So, ma'am, while you were talking, now you've touched a very important topic here कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट. अब इसका कंसेप्ट सच में मतलब मुझे भी नहीं पता था. आई नो न्यूट्रिशनिस्ट होता है, बट ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं और नॉर्मल लोग भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हायर करते हैं. आई हैड नो क्लू. तो एक चीज़ बताइए, अलॉन्ग विद मेकिंग दोज चेंजेस टू योर डाइट, आपने कोई वाइटामिन भी लिए, लाइक इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन या कैप्सूल्स और सो? Yeah, so as a norm, हम लोग बोलते हैं any lady above 40 should be taking calcium and vitamin D. The reason being हमारे डाइट में से इतना कैल्शियम और विटामिन डी हमें मिलता नहीं है. एक तो विटामिन डी तो नॉन वेज डाइट में ही मिलता है, वेज डाइट में आपको मिलता नहीं है. और फिर उसका जो है दूसरा सोर्स है सनलाइट. पर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो काम करने का तरीका है, हम लोग इंडोर्स रहते हैं, दोपहर की धूप हमें लगती नहीं है, एंड जब लगेगी भी तो वी आर मोस्टली कवर्ड. तो कितना डायरेक्ट सन जो है आपके स्किन के साथ कांटेक्ट में बहुत कम रहता है, तो आप उतना विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. तो कैल्शियम एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट्स तो हर इंडियन वुमेन को लेना ही है. बट वंस यू क्रॉस अबाउट 40 एंड इफ यू आर अ रनर, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स और बढ़ जाती है कैल्शियम की एंड विटामिन की. तो ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको ध्यान देना है. ईयरली आपको टेस्ट, ओके आई विल कम टू दिस पॉइंट लेटर ऑन. पर विटामिन B12 की भी एक जरूरत होती है जो आपको लेना ही है एज रनर्स. आई टोटली एग्री मैम. आई थिंक मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है, व्हेन आई रन, इफ आई टेक विटामिन B12, मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है. आई थिंक मेडिकली मैं इतना इस बात को नहीं समझ पाती कि क्यों या कैसे, बट I can see the difference कि next day when I go for run again or I do any exercise, मेरे में energy level ज़्यादा होता है, recovery बहुत fast हो जाती है. I think medically मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है. Do you want to say anything about that? So, see, for recovery, not only vitamins are important, but I would say protein supplements are also important. Correct. So, हमारा जो protein intake होता है, as we say, runners should be taking somewhere between 1 to 1.5 or 1.6 grams of per kg of body weight protein उतना लेना है. तो होता कैसे, आप जो है if you are weighing 50 kgs or 60 kgs, आप 60 ग्राम प्रोटीन खाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है. क्योंकि अगर आप 60 ग्राम पनीर भी खाएंगे तो उसमें से पूरा प्रोटीन नहीं रहता है. Some percentage of it is protein, some percentage is fat. तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन दिन भर में खाना इज वेरी चैलेंजिंग, 60 to 90 ग्राम्स. तो इसलिए जो है ना, अभी आजकल जैसे यू गेट दिस वे प्रोटीन पाउडर जो होता है, तो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि जैसा मेरा रन खत्म होता है, वो विंडो पीरियड जो होता है 30 मिनट्स का, नॉट ओनली रन, इवन इफ इट्स अ वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या कोई फंक्शनल ट्रेनिंग करती हूँ, तो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट विद इन द 30 मिनट्स विंडो पीरियड में आई ऑलवेज टेक माई प्रोटीन पाउडर.
द फर्स्ट थिंग आई कैरी इट विथ मी, एंड उसको मैं हमेशा लेती हूँ। तो उससे भी जो है ना आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है अलॉन्ग विथ विटामिन। Okay, okay. No, thanks, ma'am. I think even I have started taking care of it very recently. पहले मुझे लगता था सब ऐसे ही बोलते हैं, आई जस्ट इग्नोर्ड एवरी एडवाइस, बट एज आई स्टार्टेड ग्रोइंग ओल्डर मुझे भी समझ में आने लगा कि यू कांट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग अगर आप इफ़ यू डोंट टेक दीज थिंग्स, राइटली सेड। तो मैम बताइए नाउ that you've done half marathon also. I think somewhere in 2018 you started your full marathon, or was it 2019? No, 2019 I started training for my full marathon, and 2020 January Tata Mumbai marathon was my first full marathon that I did. ओके, तो मैम वाई फुल मैराथन? अब फुल मैराथन भी हो गया, उसके बाद अल्ट्रा का आपके दिमाग में कैसे आया? लाइक आपको पहले पता था उसके बारे में, और हाउ you could fathom the idea of doing 42 kilometers and then beyond 42 as well? Okay, so let me first come कि मैंने 42 कैसे किया। 42 ऐसे किया कि जब मैंने ये रनिंग ग्रुप जो मेरा ज्वाइन किया था मैंने, तो वहां पर जो है ना काफी लोग प्रिपेयर करने लग गए थे फॉर देयर फुल मैराथन। तो मुझे भी थोड़ा सा मन में होने लग गया कि चलो मैं भी कोशिश करती हूँ। एंड एक्चुअली हुआ ऐसे कि मेरे नॉन रनर फ्रेंड्स बोलते थे अरे 21 तो कर लेती हो ना आराम से, और 21 कर लो तो 42 हो जाते हैं। मैंने कहा 21 + 21 42 इतना आसान नहीं है जितना वो आपको पेपर पे या कैलसी पे लगता है, बट रनिंग इज डिफरेंट। तो ट्राई करके तो देख, बिना ट्राई किए तो ऐसे कैसे बोलती है। सो फिर वो टाटा मुंबई मैराथन के बारे में मैंने देखा, आई वेंट टू देयर वेबसाइट, उन्होंने भी बताया कट ऑफ टाइम 7 आवर्स है। मैंने कहा चलो चल के भी मैं अगर कर लूंगी तो भी हो ही जाएगा 7 घंटे में। एंड आई सेड व्हाई नॉट, गिव लेट मी टेक अ चांस एंड लेट मी ट्राई डूइंग इट। So I just met a few like-minded friends also. They were also, I mean, planning कि चलो एक फर्स्ट फुल मैराथन करके देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। तो वो फर्स्ट फुल मैराथन किया, एंड ओके आई डिडंट टाइम वेरी वेल, बट ठीक है मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से इट वाज गुड। आई डिड इट इन 5 hours and 49 minutes, बट आई वाज हैप्पी कि आई अकम्प्लिश दैट डिस्टेंस। एंड ठीक है, अब मैंने कहा ये तो फर्स्ट था, 5:49 हुआ, गुड। इसके बाद मैं अगले साल के लिए मैं अच्छी तरह से मेहनत करूंगी। दिस वाज जस्ट एक्सपीरियंसिंग हाउ इट वाज। सो आई एंड थिंक उसके बाद सॉरी क्या बोलिए ना। मैंने कल रनिंग एक ऐसी चीज़ है, हमें लगता है कि एक हाफ कर लिया तो हम खुश हो जाएंगे, फिर हम सोचते हैं एक फुल कर लिया फिर खुश हो जाएंगे, बट वो कुछ और ही ट्रिगर कर देता है, इजंट इट? एक फुल कर लिया, देन यू वांट टू इम्प्रूव द टाइम एंड मे बी देन यू वांट टू इम्प्रूव द डिस्टेंस। तो मतलब आई थिंक गोल्स बहुत आगे ही बढ़ते जाते हैं हम, यू कांट लुक बैक वंस यू स्टार्ट। राइट राइट राइट। आई तो थिंक ऐसे हुआ कि पोस्ट दैट 5:49 मैराथन आई वांटेड टू इम्प्रूव माय टाइमिंग द नेक्स्ट ईयर। तो उसके बाद लॉकडाउन, कोविड केम, पैंडेमिक आ गया। 2 साल तक तो इवेंट्स होते नहीं रहे, पर ये 2 साल में मैंने अपनी प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी। प्रैक्टिस छोड़ी नहीं, मतलब इनिशियल 2 महीने जब एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तो मैं घर में जो है ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करती थी। ऑफ कोर्स द रनिंग ग्रुप दैट आई हैड जॉइंड दे यूज्ड टू कंडक्ट जूम सेशन, एंड हम लोग रोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे, एंड मेरी स्ट्रेंथ अच्छी बिल्डअप हो गई थी। सो व्हेन वी स्टार्टेड रनिंग जो है ना, तो मेरे को विद ईज में भागने लग गई थी। काफी फर्क पड़ा। मुझे ऐसे लगा 3-4 महीने से मैं भागी नहीं हूँ, तो अभी जब रोड्स खुल गए भागने के लिए, विल आई बी एबल टू रन? नहीं, बट दैट वाज अ मोर एफर्टलेस रन। एंड धीरे 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 करते हुए जब 2022 में जब इवेंट्स होने लग गए, तो मैं अपने आप आई सॉ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ मोर देन एन आवर इन माय फुल मैराथन टाइमिंग। हाँ, तो ऐसे करते करते जब मैं 440 का मेरा फुल मैराथन हुआ, एंड आई वाज क्वालिफाइड फॉर कॉमरेड्स। ये मेरे दिमाग में कभी था नहीं कि मैं कॉमरेड्स के लिए क्वालिफाई होंगी या मुझे कोई अल्ट्रा डिस्टेंस करना है, ये मैंने कभी सपने में सोचा नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू डू अ फुल मैराथन इन अ डिसेंट टाइम। But my husband was a very supportive person, as I told you earlier. He and a few friends of mine, उन्होंने बोला अब तो क्वालिफाई हो गए ना, आपको कॉमरेड्स करना है। And that's how my journey to ultra distances started. ओके, वेरी नाइस। आपने पहले भी ये बात बोली थी कि आप जब रनिंग करते थे आप चाहते थे कि हम लोग हफ हफ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रीदिंग हफ हफ के करते हैं, मतलब बहुत नॉर्मली कॉन्वर्सेशनल रनिंग करना चाहते हैं। आई थिंक ये हर रनर के दिमाग में भी रहता होगा। मेरे कोच को हमेशा ये बोलती रहती थी, लाइक आई वुड फिनिश अ डिस्टेंस, इवन इफ आई वुड फिनिश अ 3 hours 4 hours 5 hour ट्रेनिंग रन, मैं उनको बोलती थी कितना मुश्किल हुआ है, मुझे कितना पेन हुआ है, आपको पता नहीं है, आई वांट टू डू इट विद ईज। वो देखो लोग कितना आराम से कर रहे हैं। मतलब मैं उनको, आई डोंट नो, इट साउंड वेरी बैड, बट आई वुड ऑलवेज से हिम,
जैसे कुत्ते हाँफते हैं ना, मैं वैसे कर रही हूँ। मुझे नॉर्मल लोगों की तरह करना है, लाइक आई वांट टू फील वेरी हैप्पी, कंटेंट, इजी, एंड इट डिड हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट आई थिंक वो फीलिंग ना, आई जस्ट वांटेड कि बहुत इजी आए, बट देन अगर इजी आ जाता है फिर आप अपना टारगेट इंक्रीज कर देते हो, लाइक यू डोंट वांट टू सेटल फॉर द इजी, राइट? Right, right. But with ultra distance runs, I'll tell you, you don't start focusing on pace. So it's more of easy long runs that you start doing. And then that is where you start enjoying those runs. कि रोज आप जा रहे हो, रोज आप भाग के आ रहे हो, and it's usually done in groups. So वो बातें करते 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 आप भाग भाग रहे हो, तो उसका मजा अलग आता है. करेक्ट, करेक्ट. सो मैम, टॉक मी अबाउट योर फर्स्ट अल्ट्रा. आपने कौन सी फर्स्ट अल्ट्रा की, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Yeah, so my first ultra was this 12-hour stadium run. तो उसमें तो हमें जो है हमारे कोच ने बताया था कि यू शुड लर्न टू बी मोर ऑन योर फीट. आप जितना टाइम आपके पैरों पे आप स्पेंड करोगे दिन भर में, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. तो हम लोग सिर्फ हार्ट रेट बेस्ड रन ही करते थे. सो इट यूज टू बी लॉन्ग कॉन्वर्सेशनल रन, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4 घंटा, कभी कभी 7 hours ऑल्सो वी यूज टू रन ऑन संडेज. सुबह 6 बजे स्टार्ट किए तो दोपहर के 1 बजे तक हम भाग ही रहे हैं. उसके बीच में हमने ब्रेक ले लिया, कुछ केला वेला खा लिया, एंड देन वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग. एंड बिलीव मी, तो प्रिपरेशन जो होता है ना, जो टाइम जो रहता है, टाइम फ्रेम ऑफ 4 महीने, आप जो प्लान करते हो, प्रिपेयर करते हो कि इवेंट है अगस्त में, पर स्टार्ट हमने मई जून में किया प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन बहुत मजा आता है. एंड व्हेन द प्रिपरेशन गोज वेल, तो इवेंट डे इज लाइक अ केक वॉक, टोटली अ केक वॉक. तो बहुत बहुत मजा आता है इवेंट में. व्हेन यू डू द प्रैक्टिस रिलीजियसली, जैसे आपके कोच ने बताया, वैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो द इवेंट इज जस्ट लाइक जस्ट अ केक वॉक, एंड बहुत मजा आए. आई कैन सो रिलेट टू इट. अगर आपका ट्रेनिंग रन मुश्किल है, आपका एक्चुअल रन, जो इवेंट रन होगा, वो इजी रहेगा. अगर आपका ट्रेनिंग रन बहुत इजी है तो आपका इवेंट अच्छा नहीं जा सकता. ट्रू ट्रू ट्रू. I can totally relate to that feeling. So, ma'am, now आपने that means 42 के बाद सीधा 12 hours किया. Is that so? यस. मैम, एक चीज़ और बताइए. आई वांट टू गेट इनटू दैट माइंडसेट. जितना मुझे समझ में आता है, बहुत स्कैरी हो जाता है. Like, 12 hours run is scary in the mind itself. So, how did you calm your mind? I'll tell you what happened was, if I would have a long run planned in the morning, जैसे मुझे 3 घंटा भागना है, 4 घंटा भागना है, 5 घंटा भागना है, पहले तो मुझे कई बार नींद भी नहीं आती थी, बिकॉज आई यूज टू बी सो स्केर्ड कि मुझे सुबह उठ के जाना है, और मैं अगर नहीं कर पाई तो, लाइक, डिड इट एवर हैपन विद यू? वर यू एवर स्केर्ड, और वाज इट ऑलवेज हैप्पी गो लकी टाइप्स? No, see, there are always times, good times, bad times, all types of times are there. तो कभी कभी ऐसे होता था कि कुछ स्पीड वर्कआउट्स दिए, तो रात को तो उसी टेंशन में होता था कि कल मुझसे ये हो पाएगा या नहीं, कल मुझसे ये हो पाएगा. तो कभी तो कोच को भी फोन करके पूछती थी, ये आपने जो टास्क दिया, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा. तो कोशिश तो करो, करके आ जाओ, फिर बोलना. एंड देन करके आती थी तो मेरे को लगता था, अरे ये तो हो गया मुझसे, ये तो इतना मुश्किल था नहीं जितना मैं सोचती थी. बट यस, सम डेज यूज्ड टू बी रियली डिफिकल्ट. सुबह बेड में से उठना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली अगर जब ठंड का मौसम हो या जोरदार बारिश हो रही है एंड इट इज वेरी कोल्ड. पर मुझ में कहीं पर तो एक है वो चीज, डिसिप्लिन नाम की चीज बहुत ज्यादा है मुझ में. तो कितना भी कुछ भी हो, मैं वो मोबाइल स्नूज करने की, अलार्म स्नूज करने की आदत मुझ में नहीं है. कभी एक आध वक्त किया तो किया, बट देन आई एम अ पर्सन की 5:30 का अलार्म है तो मैं उसके पहले ही उठ के जो है पहले ही जगी रहती हूँ कि मेरा अलार्म मुझे बंद करना है एंड आई हैव टू गेट अप एंड गो फॉर अ रन. तो वो डिसिप्लिन मुझ में है, तो वो थोड़ा सा मुझे हेल्प किया है इन रनिंग अल्ट्राज एज सच. So, ma'am, was it always there, or did you develop it during this time? No, I was a disciplined person from my childhood days only. That's something I got it from my father. You are lucky, ma'am. It's too hard to get up in the morning sometimes. I'm facing that challenge these days. It's been quite some while कि मैं रनिंग नहीं कर रही हूँ, तो वापस रीस्टार्ट करने के लिए ना उस रूटीन में आना बड़ा मुश्किल लगता है. सुबह दिल्ली में काफ़ी ठंड है, तो आराम से रजाई में, मतलब बड़ा ही मुश्किल लगता है. उठ भी जाओ ना, उसके बाद रजाई से निकलना मुश्किल हो जाता है. सो आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड टू कि जब मैं ये बोल सकूँ कि इट्स अ रूटीन टू मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. But let's see. तो मैम, talk me about now that you were doing अल्ट्रा. एक तो मैं आपकी स्पेशली 100 किलोमीटर्स हेल रेस के बारे में जानना चाहती हूँ, बिकॉज इट इज़ रियली अ हेल.
talk me about that, and then we'll move further. Yeah. Sure. तो हेल रेस की तैयारी ऐसे हुई कि मी एंड a few of our friends would we all did comrades. हम लोग का 5 जन का ग्रुप था जिन्होंने हमने comrades किए थे. Me, my running buddy from Mumbai and 3 from Nashik. So we all had decided comrades करने से पहले कि हम लोग जो है border race करेंगे in December. तो आ गए कॉमरेड से वापस सितंबर में. हमने सोचा चलो अभी हमको बॉर्डर रन के लिए प्रिपेयर करना है. तो रेड दोज रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस कि आपको हर 10 किलोमीटर्स के बाद ही आपको सपोर्ट मिलेगा एंड इट विल बी स्टार्टिंग एट 12 नून इन द आफ्टरनून धूप में जैसलमेर के डेजर्ट्स में एंड इट विल बी फिनिशिंग समवेयर इन द पोस्ट मिडनाइट. तो वहां पे ठंड भी बहुत रहेगी, ऑलमोस्ट 0 तक टेम्परेचर जाएगा. तो यहाँ धूप में आप 30 प्लस के टेम्परेचर्स में पहले स्टार्ट करोगे एंड देन यू विल हैव टू run till you reach the 0 temperature and against the body clock. आप दोपहर में स्टार्ट कर रहे हो रन. यूजुअली हमारे रन जो है अर्ली मॉर्निंग होते हैं या इवन आई हैव प्रैक्टिस रनिंग इन द नाइट, स्टार्टिंग द रन एट 12 इन द नाइट. बट ये ऐसे दोपहर को 12 बजे कभी स्टार्ट नहीं किया था, तो इसलिए हमने प्रैक्टिस भी वैसे किया. हमने जो है ना वी स्टार्टेड टेकिंग दिस हाइड्रेशन बैग ऑन आवर बैग. उसमें जो है पानी भरते थे, केला भरते थे, चिक्की विक्की सब भर के जो है ना अच्छा 2-3 किलो का वजन जो है पीठ पे लेकर जो है हम भागना स्टार्ट किए थे. हमारे संडे लॉन्ग रन सब वैसे ही होते थे. सो कपल ऑफ रन्स वी हैड इन नासिक ऑल्सो एंड नासिक में हम लोग रन्स जो है स्टार्ट किए ऐसे दोपहर को 11 बजे 12 बजे एंड भरी धूप में जो है हमने जो है वो रन्स किए एंड इट रियली हेल्प्ड अस. जब क्योंकि इवेंट डे वाज अगेन एज आई टोल्ड यू ना प्रैक्टिस रन्स यूज्ड टू बी सो डिफिकल्ट. मतलब कभी कभी रोना आता था कि अरे कल पे फिर उठना है, उठ के हमें रन करना है. हाँ, एंड बैक टू बैक रन जब होते हैं, सैटरडे को आपने 25 किलोमीटर भागे, फिर संडे को आपको 40 किलोमीटर भागना है, 25 के बाद 40 भागना है एंड 25 करके भी आप आराम नहीं किए हो घर पे. 25 करके आए हो एंड देन आई हैड टू गो टू माय वर्क आल्सो. तो सुबह वेकिंग अप एट 3:34, खाना बनाओ, देन गो फॉर योर रन ऑफ 25 किलोमीटर्स. वो करके आ जाओ, गो टू वर्क, कम बैक फ्रॉम वर्क. You cannot say no to your household work and other responsibilities को आप मना नहीं कर सकते हो. That is a part and parcel of your life. तो वो करके आप नेक्स्ट डे जो है फिर आप 40 किलोमीटर दौड़ने के लिए रेडी रहते हो. तो all this had made us so strong कि हमने बॉर्डर रन भी जो है ना ऐसे हंसते हंसते ही किया था, लिटरली हंसते हंसते किया था. एंड वी वर जस्ट काउंटिंग, एक वाटर स्टेशन हो गया और 2-4 वाटर स्टेशन, फिर 100 किलोमीटर हो जाएगा बिकॉज एवरी वाटर स्टेशन वॉज 10 किलोमीटर्स. So we didn't count 100 kilometers. We just counted 10 water stations we have to, cross. तो 2 हो गए और 2 हो गए, ऐसे करते करते जो है ना 100 हो गया. And we ran in a group. ग्रुप में भागने का मजा ही और रहता है. Right, ma'am. I totally understand the mindset. I think अल्ट्रास में ये mindset बहुत different होता है. We don't, मतलब लोग 100 किलोमीटर को 100 किलोमीटर देखते हैं, but we break it down. We just focus at the first 10K, then the next 10K. बस 10 किलोमीटर ही भागना होता है. तो दिमाग में हमेशा सिर्फ 10K ही चलता है, right? Because when I did my first 12 hours, I remember मेरे दिमाग में 15 मिनट का स्लॉट था. तो हर 15 मिनट में सोचती थी मुझे 15 मिनट भागना है. जब 15 मिनट खत्म हो जाता था नेक्स्ट 15 मिनट, फिर नेक्स्ट 15 मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट, और एंड आई यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड. 1 घंटा हो गया एंड देन नेक्स्ट 15 मिनट स्लॉट ऑफ दैट नेक्स्ट आवर. सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना, बिकॉज अगर कहीं हमारे दिमाग में ये आ गया कि हमने 100 किलोमीटर्स करना है या 12 आवर्स करना है, तो वहीं पे फ्लैट हो जाता है. वहीं पे इंसान डर के, कई बार तो इट हैपेंड विद मी मैम, आई एम नॉट श्योर विद यू, पर वो एक बार अगर डर बैठ जाए ना दिमाग में तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इजंट इट? या सो इट्स बेसिकली अ माइंड गेम. मैं ये सोचती थी 10 किलोमीटर में क्रॉस करूंगी ना तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा वहां पे. मेरा इंसेंटिव खाना था. हाँ, मुझे खाने को मिलेगा, मुझे वहां स्निकर्स मिलेगा, मुझे वहां पे एनर्जाल मिलेगा, मुझे वहां कोक मिलेगा. तो दैट इंसेंटिव kept on pushing me. And also I will tell you there are 2 kinds of people. There will be people who will be scaring you. अरे 100 किलोमीटर्स है, बहुत मुश्किल है, ये है वो है, हमेशा नेगेटिव बोल बोल के ऐसे डराने वाले. Same happened with stadium run also, 12 hour stadium run. And there are this other kind of people, अरे कुछ नहीं, हो जाएगा, सबने किया ना, हमने किया, वैसे तुम्हारा भी हो जाएगा. तो दोनों की सुनो पर करो फिर अपने मन की, ये है वो. तो ऐसे सेट ना, वो अपने गोल्स को छोटे छोटे करो. 10K पे जाके अपने को खाने को मिलेगा, दैट वे. और अभी 60K हो गया तो आपको जो है चेंज करने के लिए एक ब्रेक मिलेगा. सो यू गेट 5 to 10 minutes extra where you can sit on the chair, maybe change your clothes into warm clothes for the night. तो वैसे वो सारे इंसेंटिव्स थे हम लोग के लिए कि वहां जाके ये खाने को मिलेगा, आगे जाएंगे तो ये मिलेगा, फोटोग्राफर है,
I mean, I take these as small things, because these things make your run memorable. एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है अगर प्रैक्टिस करा हो ना तो फिर ये छोटी-छोटी चीज़ें में आप एन्जॉय करते हो। बिकॉज़ एटलीस्ट इतना दिमाग चलता है। अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो मुझे लगता है मैम दिमाग भी चलना बंद हो जाता है। इज़ इट लाइक absolutely right. So I'm talking about now, you're a woman, right? Now talk me about periods. What do you do on periods? Do you run on periods? Practice runs karte hai? What what do you use? Is it pads, tampons, cups? And how's your experience during that time of the month? Okay. So for me, I feel that, period days just like any other normal day. Mhm. I have never missed any of my trainings, any of my runs due to my menstrual periods or whatever. I always follow this schedule. I've even run as long as 55 kilometers during my second day of periods. God. And I'm a person who gets a lot of bad chafing. My chafing is really bad, but then I take precautions about it. But of late, yeah, मुझे थोड़ा सा तकलीफ होने लग गया because I'm nearing my menopause, so the flow is heavy and थोड़ा सा भी cramps वैम्स आते हैं. But still, I'm continuing with my long runs even on the second day when it's the heaviest day. So I recently did 35 kilometers also, and at a good, decent pace also I did. So come what may, I don't compromise with my running. I like That's how it is. awesome. Which product do you use? And because you've told about chafing, I think I never talked about it. And it's so common. And as you are saying कि आपको ज़्यादा होता है, तो which product do you use to avoid that? Yeah. So I have been suggested to use tampons and menstrual cups, or even these you get these period panties now. But I have not tried any of these, thinking अब तो menopause हो गया है. मतलब I'm nearing menopause. Maybe it's another 6 months. Maybe it's another 6 months. करके वो मेरी तरफ से जो है ना थोड़ा इग्नोर किया गया है मैंने या निग्लेक्ट किया है, I would say. So I'm still using the traditional sanitary pads only. No, ma'am, it is not like it's hard for me to accept. God, like I can't think of. I'll tell you, I knew about tampon since quite a while. Like मेरे को 2016 में पता चल गया था there's something called tampon, but I was scared to use. Then 2018 when I started running, I asked all my friends कि किसी ने भी tampon या cups use किया है so that I can get first hand reviews. पर क्या हुआ, किसी ने भी नहीं यूज़ किया था, किसी ने भी नहीं. तो फिर मुझे लगा अब कोई भी नहीं है तो आई हैव टू गिव इट अ ट्राई. तो दैट्स वेयर आई स्विच फ्रॉम पैड्स टू टैम्पून्स, बट इट वॉज हार्ड इन माई हेड, लाइक अपना माइंड सेट करने का. पर फिर मुझे लगा या तो रनिंग छोड़ दो या फिर यू जस्ट गिव इट अ ट्राई, लाइक यू कांट रन फ्रॉम इट anymore. And ma'am, I bought my first tampons in 2016, but I used my first tampon in 2018. I had that same pack with me for 2 years Okay. before I even tried it. But then it's a game changer. Like I would say, just try, ma'am. It's easy. Then I should try. Somewhat, trying something new. There's a sort of a hesitation कि try करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. And yeah, तो वो तो hesitation में ही. And then many suggested menstrual cups also to me. पर वही हुआ कि ठीक है अभी तो क्या maybe just a couple of months more करके जो है already 1 साल बीत चुका है इसमें. But I think I should try now. Yeah. I tried cups also. It didn't suit me. In fact, I bought 3 different variety of cups to just see कि कोई तो suit करेगा, but it didn't suit me as such. But nice to know about that. And ma'am, tell me now, as a woman, do you ever feel guilty because you are taking that time away from your family also? How do you set it in your mindset? आपको क्या लगता है कि क्योंकि sometimes it happens, the society makes you feel that you are being selfish, that we are spending so much time in what we like. What goes into your mind? What is your thought process? Yeah, I totally agree. It's more that society feels than your family members feel that you're not giving them time. And the society feels that, सुबह उठ के भागने जाती है, घर में कुछ त्योहार व्योहार है या नहीं, people actually say it in this way, घर वर है कि नहीं, घर से निकाल दिया है कि नहीं. But nahi, I feel that, when you go for a run and you come back, you're a happy you. You're a happy person. You're a healthier person. So आपका जो है ना, आप आकर जो है ना घर में ज्यादा क्वालिटी टाइम दे पाते हो. आपकी जो एनर्जी लेवल्स इतने ज्यादा बूस्टेड आप रहते हैं, आपका स्टैमिना इतना ज्यादा रहता है कि आप
जो है ना घर में जो टाइम देते हो उसमें आप बहुत कुछ enthusiastically कर पाते हो. You're able to spend more time. I mean, whenever the times that you spend with your spouse, your kids, you're more energetic and enthusiastic while talking to them. और while playing with them, और जो भी आपके एक्टिविटीज जो घर में हो रहे हैं आप बहुत एंथुजियाज्म से करते हो. आई गिव यू दिस एग्जांपल. जैसे लॉकडाउन जब हुआ, सो जो लॉकडाउन हुआ, इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू मैनेज एवरीथिंग, क्योंकि रनिंग हैज टॉट अस सो मच ऑफ थिंग्स. डिसिप्लिन तो है ही है, पर उसके साथ आपका स्टैमिना बढ़ गया है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ गया है. तो वो उसको जो है ना मैं क्रॉस ट्रेनिंग समझती थी. जब मेरे पास लॉकडाउन में आई डिडंट हैव मेड्स, आई सेड ओके दिस इज लाइक अ क्रॉस ट्रेनिंग फॉर मी. तो वो एक, और मेरा डिसिप्लिन का तो नेचर पहले से ही था, बट रनिंग हैज टॉट मी टू बी मोर डिसिप्लिन. तो इट ऑल मैं बहुत एंथुजियास्टिकली सब कर पाती थी. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे we did have time for each other and with more energy. So I feel when a person is happy and healthy, then it reflects on the family also. So वो मुझे कभी guilt feeling कभी नहीं आया. And for me, luckily, my husband is also a sports person. He's also into running, not as much as I do, but still he's also into various sports. He plays table tennis, he plays badminton, he's a good swimmer, cyclist. So being a versatile sports person, he understands that. And my daughter is also equally supportive. So that way I'm lucky. That's really nice to know. I can totally relate to it because आप एक रनिंग में जाते हैं, आप एक सनराइज को भी बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं. आई थिंक व्हेन आई गेट इरिटेटेड माय हस्बैंड एंड माय डॉटर जस्ट से दैट यू गो फॉर अ रन मामा, लाइक यू गो फॉर अ रन. It happens, right? They're so used to now not seeing us at home in the morning itself and us coming back and telling the stories and just bothering about how much kilometer we did, how many hours we did, and so on. Right. Absolutely. No, great, ma'am. So, any particular goals that you keep in mind for 2023 now that you've already done the Tata Mumbai Marathon? What's your plan ahead? Well, no goals as such, because I feel take one day at a time. Basically, take one day at a time. And let's hope that we all have a happy and a healthy 2023. The एंड गोल या एंड एम आप बोलेंगे कि आप कितना भी रन करो, कुछ भी करो, इट शुड बी इंजरी फ्री एंड इट शुड गिव यू हैप्पीनेस. ऐसे भी नहीं कि बाबा आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं एंड देन यू आर हैविंग एक्स एंड पेन्स एंड उसके साथ आप रन कर रहे हैं. एक्स एंड पेन्स आर पार्ट ऑफ रन, बट इतना भी नहीं कि यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट. सो जो है वो यू शुड बी एबल टू एंजॉय द रन वॉट एवर यूर डूइंग. That's what is I feel. So no particular goal as such कि I want to complete 200 kilometers or 400 or इतना mileage करना है साल का. नहीं, जो कर रही हूँ वो मेरे को enjoyment के साथ करना है and injury free. I think because you're so dedicated and so disciplined, वो अपने आप ही result आ जाता है. Like you don't have to bother about the end result because you're putting in the effort every day as such. Rightly said. So, ma'am, any message to girls, women out there, or any folks in India that you want to send in a message as such? Yeah, a message to each and everyone, irrespective of their age, irrespective of their gender. Dedicate at least 45 minutes to 1 hour for yourself, for any hobby. And usme I would say that 45 minutes to 1 hour should be for hobby of a physical activity. As a child, believe me, I was a couch potato. तो अभी मेरे जब स्कूल फ्रेंड्स देखते हैं मुझे भागते हुए एंड 100 किलोमीटर्स भागी एंड ऑल, दे आर सो शॉक्ड. तो सोनाली तू 100 मीटर्स भी भाग सकती थी स्कूल में. एंड दैट वाज द फैक्ट. 100 मीटर्स का रेस होता था, मेरे को पीछे मुड़ के देखना पड़ता था मेरे पीछे भी कोई है या नहीं. इतना मेरा बुरा हाल था. आई वाज अ काउच पोटैटो एंड ऑल थ्रू आउट आई वाज लाइक दैट ओनली टिल आई वाज 40. एंड 40 के बाद इट हिट मी कि नहीं, नाउ आई शुड टेक केयर ऑफ माय हेल्थ. एंड लकीली फॉर मी, everything is good. I don't suffer from any illnesses like diabetes, blood pressure, or any lifestyle related jo disorders hote hain. Luckily, I didn't suffer from any of them so far. So that is good, but it need not be. Now with the changing lifestyle and eating habits, I think we all should dedicate at least 45 minutes to 1 hour every day for ourselves for some kind of a sport, be it walking, cycling, swimming, going to the gym, maybe playing badminton, or any sort of a sport. But yes, and also one thing I wanted to insist, which we were discussing and then I said I'll talk about it later, is an annual health checkup, which is a mandate for each and every one of us.
Runners को तो है ही है. Runners should be checking on a lot of parameters because if their vitamin D is low and they keep on running, that might end up in injury to the bones. But otherwise also, your liver enzymes, your sugars, all those things need to be monitored. Your heart condition, if your heart is weak, you should not be pushing yourself too much. So annual checkup is mandatory. Okay, ma'am, while you're talking about annual checkup, I'll tell you, I am looking for, where to get that annual checkup done. आप कोई recommend कर सकते हैं any particular labs or hospital? Nothing is sponsored on this podcast and channel, but coming from a doctor. And any NABL accredited lab. NABL accredited lab is National Association of, NABL lab जो होता है ना, any NABL accredited lab is a good lab. They have standard equipments and they do it in a standard way only. So you can get your investigations done at any of these labs. And basic checkup like, your blood sugar needs to be checked, your cholesterol, your vitamin levels, your liver enzymes, kidney enzymes, itna bhi aap check karenge, thyroid check karenge. And then stress test or a 2D echo. I would suggest एक साल आप stress test कर लो, the next year you should do a 2D echo of the heart. So these basic tests and the bone density, these tests अगर आप करेंगे once a year, I mean it is going to help each and every individual, पर runners को तो और ज़्यादा. Because if you know what is lacking, so you can act upon it accordingly, which will enhance your performance. What happens is, when we talk about any lab, I am in the process of doing that. इसीलिए मैं बता रही हूँ as a layman. उसमें वो लोग इतने सारे पैकेज बना देते हैं ना, अब यही नहीं समझ में आता कि कौन सा पैकेज चूज करना चाहिए. तो हाउ टू गो अबाउट इट, लाइक शैल आई वेरीफाई जो आप टेस्ट बोल रहे हैं कि वो वाला है, तो और इज देयर एनी स्टैंडर्ड वे कि कौन सा पैकेज चूज करें अगर हम ईयरली चेकअप में भी बात करें तो? So I agree with you. Unfortunately, packages बहुत होते हैं क्योंकि every individual is different. Every individual is different. जो 30 में जो problems होते हैं वो कम होते हैं as compared to a 40-year-old person will have or someone who is 60-year-old person. So हर किसी के लिए अलग अलग बनाया जाता है. Unfortunately, इंडिया में हम स्पोर्ट्स मेडिसिन पे उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, तो इसलिए स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है ना अपने पैकेजेस बनते नहीं है. So maybe you should take help of your coach and your family doctor and then get the tests accordingly done. Okay, fine, ma'am. Ma'am, anything else that you want to add on before we wrap up a wonderful talk with you? Anything you want to add up? So basically, we all have the potential in us, but we don't unleash it. So we need to tap on it and, it just needs some time and some luck part also. And you need to get a proper channel to focus on it. And, so but that's the thing that, we all should dedicate some time for ourselves. That's what I would like to say. At least an hour for some physical kind of activity and get your health checkups done. Because as, even Kipchoge says that no human is limited. So, we put our own no human is limited. Yeah. So we all have the capacity, just that, we don't push our limits. We need to push our limits. We all have the same 24 hours. It's just that we need to prioritize on our requirements and then we should focus on them. Right. Thank you so much, ma'am. It was wonderful talking to you. We had a lovely conversation, and probably after the next run you do, the ultra run that you do, we will focus on that one run and probably get talking again. Thank you. Definitely, Meenal. Definitely. It was a pleasure talking to you. Thank you.